Here is an important question for 10th graders from carbons compounds. So question can come that a compound X, it reacts with alkaline KMnO4 or acidified potassium dichromate to form a carboxylic acid. When it reacts with sodium, it produces sodium ethoxide and a gas is produced that blows a burning candle with a pop sound. Here, sodium ethoxide could be mentioned, or you can be given a compound Y is formed along with the formation of a gas that blows a burning candle with a pop sound. The same compound X, when reacts with hot concentrated sulfuric acid, it forms an alkene. And when this compound X undergoes combustion, when it is burnt in air, it produces carbon dioxide, water, heat and light. Identify the compound X, the carboxylic acid formed, the alkene formed, and name the gas formed during the reaction. So, looks to be a difficult question, but it's an easy one. So, our compound X is ethanol. So, it's C2H5OH. When it reacts with KMnO4 or K2Cr2O7, oxidation reaction hogi and ethanoic acid will be formed. So what would be formed is CH3COOH. Remember, these two are oxidizing agent. तो उसमें oxygen add कर देते हैं and ethanoic acid will be formed. Now, जब alcohol react करता है hot concentrated sulfuric acid के साथ तो ethene form होता है. याद रखना, hot concentrated sulfuric acid हमेशा किसी भी चीज में से पानी remove कर सकता है. Can remove water from anything. तो आप C2H5OH इस फॉर्मूले में से वाटर का रिमूव कर दो. वाटर रिमूव करोगे तो आपका HOH रिमूव हो जाएगा एंड व्हाट वुड बी लेफ्ट इज C2H4. C2H4 इज एल्कीन, that is ethene. Ethene would be formed and water would be absorbed by concentrated sulfuric acid. वो उसको absorb कर लेगा. अब गैस कौन सी बनी है जो कि पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है? सो यू नो दैट वेरी वेल, इट्स हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग दिस पॉप साउंड ऑफ द बर्निंग कैंडल. ओके, सो इस एक रिएक्शन से आप अल्कोहल की सारी प्रॉपर्टीज भी लर्न कर सकते हो. उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसका रिएक्शन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसका सोडियम के साथ रिएक्शन. ओके, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. You can take a screenshot if you want.